everyone, I am Varsha. Hi everyone, I'm Sonali. We welcome you all to the series ALUM Tales, an initiative by Chemocronies, the Chemistry Society of IIT Delhi. In this series, we will be honoring the alumni, knowing their tales, journey at, during, and after IIT Delhi. So, for this episode, we have with us another bright alumnus of IIT Delhi. He has secured All India Rank 56 in IIT GEM 2019, All India Rank 91 in CSIR NET 2020, Qualified GATE 2021, and BARC 2021. And currently, he is the scientific officer at BARC. And apart from studies, he is also interested in doing yoga, running, and playing badminton. We are talking about Pankaj Choudhary. So, everyone, let's welcome Pankaj. So, hi Pankaj, a very warm welcome to you in another chapter of ALUM Tales. Thank you. First of all, a hearty congratulations on all your achievements. Thank you, Sonali. So, Pankaj, we would love to hear how did you feel when you first entered IIT Delhi? Could you please share your academic experience about the faculty at the IIT Delhi and about your labs? The first part of question, I also want to ask from you guys that how do you feel when you come to IIT Delhi? Obviously, it's a very great moment for me because it is my dream college during my JAM preparation. So once the dream comes true, then you all know how's the feeling. So same happened with me. So that was a great moment for me. And academic in not in IIT Delhi, but all IITs have a great academic brochure, and their aim is to make us understanding like the practical concepts, how we can use the application. So that was a great thing. But in online classes, you also differentiate like IIT from the other colleges, like the content they are delivering and the purpose of the course, that is clearly visible. Yes. You can correlate with other colleges and universities, so it is different. This is true. So Pankaj, the best part of the IIT is hostel life. So आपका कोई ऐसा memorable incident है जो आप हम सबके साथ share करना चाहते हैं? From hostel life, काफी सारी चीजें होती हैं, like most important friends हमारे जो होते हैं काफी important होते हैं, because वही हमें सबसे ज्यादा support भी करते हैं और समझते भी हैं. So friends are most important thing in any college. So like most like we can say that अगर आप लोगों को पता होगा कि जब रात में अगर आप बट यू आर नॉट इन कैंपस बट रात में बाहर जाना लाइक 1, 2, 2.5, 3 लाइक रात को काफी लेट तक बाहर घूमना कैंपस में मुझे काफी अच्छा लगता था और हम काफी एंजॉय करते थे इस चीज को. सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. So, as there are many societies and extracurricular activities in IIT Delhi, were you a part of any of them? Actually, yes, I am a part of them, and the society on the behalf of you are taking the interview. I am one of the founder of Chemocronies, and now you guys are doing very great that you are adding this alumni series. We are unable to do this, but yes, so I am part of it, and there is a organization called Pahal Masti Ki Pathshala in IIT Delhi. So उसमें हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उनको हम वीकली उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे. लाइक हमारा ग्रुप होता था 5 to 6 people. We used to go. So that is also a very good part. Yes. That's very nice. Yes.
So Pankaj, as you have secured a very good rank in GATE as well as in NET exam, तो आपने क्या इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या सब कुछ सेल्फ प्रिपेयर किया था? पर्टिकुलरली फॉर नेट तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था कोचिंग वगैरह का, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका अच्छा ग्रुप है 5-6 लोगों का, तो उसी डिस्कशन के बीच में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लाइक कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डिस्कस करके, आपको एटलीस्ट कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। और सो इनके लिए हमने कोचिंग की, किसी ने भी, जो हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, हमने किसी ने भी कोचिंग नहीं ली थी। और नेट तो काफ़ी लाइक कैजुअली एटीट्यूड से दिया था, उसके लिए तो ज़्यादा कुछ सीरियस प्रिपरेशन भी नहीं थी। लेकिन हाँ, गेट के लिए हम सभी ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी। सो यस, वो सेल्फ स्टडी था। बट लाइक ग्रुप स्टडीज बहुत ही मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। या ग्रुप स्टडीज भी, और लाइक समटाइम यू आर फीलिंग लो, लाइक there is no particular reason, you are just tired from this routine kind of thing when you are preparing for competition from morning to evening. Like in between you have to take classes, then you have to make plan, आज ये करना है, आज वो करना है, assignment and all these things. तो आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो आपको वहां से भी मोटिवेशन मिलता है। so this is all about management. So yes. Okay. Okay. So while preparing, most of the students find it difficult to manage along with the labs and classes. Like how did you manage? और क्या आप students को कुछ ऐसी advice देना चाहेंगे कि हम किन mistakes को avoid कर सकते हैं preparation के time में? Actually that's the, I think the most important thing, and सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं बिकॉज इनिशियली फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है ड्यूरिंग एमएससी। तो उस टाइम पे तो सब कुछ स्मूथली चलता है, बट वंस द प्रोजेक्ट स्टार्टेड एंड तभी आप लोग थोड़े सीरियस भी होते हो कंपटीशन के लिए कि नेट एंड गेट ये भी सब देना है। तो उस टाइम पे लेकिन माइंडसेट हो जाता है लोगों का कि कौन कितना सीरियस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और कौन रिसर्च में पर्टिकुलरली पीएचडी में जाना चाहता है। और कुछ लोगों को लैब्स ज़्यादा पसंद होती हैं, दे यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लैब्स। और तो वो वहाँ से माइंडसेट हो जाता है कि मुझे लैब में ज़्यादा टाइम देना है या सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम देना है। बट आई विल नोट से कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। लैब्स अगर आप मान लीजिए आप 3-4 घंटे लैब में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में कंपटीशन का ये नहीं होना चाहिए। यू शुड एंजॉय दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज लाइफ में ये पार्ट बहुत काम आता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें आपने कितनी गेन की हैं, कितनी सीखी हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी। बिकॉज इन एनी सेक्टर यू विल बी अ केमिस्ट, रादर इन R&D, प्रोडक्शन और एकेडमिक्स, जो भी आप प्रोफेशन चूज करेंगे तो ये तो हर जगह ही काम आएंगे। बिकॉज जितना आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा यू विल बी फीलिंग ग्रेट। सो प्रायोरिटी आप दे सकते हो कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो माइंड में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इतने घंटे एटलीस्ट मुझे देने हैं। बट ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे जो भी वर्क आप कर रहे हो उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो या वहाँ पे जाके आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लैब में गए और वहाँ से फ्रस्ट्रेट होके वापस आ रहे हो और फिर उसके बाद में कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो और मूड ऑफ हो गया। तो दैट थिंग इज एक्चुअल मैनेजमेंट आई विल से, बिकॉज वही टाइम होता है जब आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्किप लैब्स, और कंपटीशन भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, एग्जाम्स भी देने होते हैं, प्रेजेंटेशन, वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क, रिपोर्ट, सब कुछ एकदम सेम टाइम पे आता है। बट यू नीड टू मैनेज, और उसमें भी फ्रेंड्स देयर हेल्प यू। और यस, गाइड भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे गाइड चूज किया है, इट विल आल्सो हेल्प यू। सो यस, So, मतलब मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को मैनेज करके लेके चलना चाहिए। इन एंटायर और लाइफ इट इज प्रेशर। इम्पोर्टेंट। सो लाइक अगर हम 1 or 2 hours भी दें डेली अपनी प्रिपरेशन के लिए तो दैट विल बी सफिशिएंट। या बट वो 1 and 2 hours यू शुड बी लाइक वेरी डेडिकेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको
जो दिन में जो चीजें हुई वही रिकॉल कर रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. बस enjoy the part. So have you done any internships during your masters? Because student के मन में ये डाउट रहता है कि internship बहुत ज़्यादा मैटर करती है for getting a job, for PhD, and according to your opinion, to what extent it is true? Actually particularly in jobs if we talk, तो किसी जॉब में इंटर्नशिप इतनी मैटर नहीं करती है. अगर आप गेट के बेसिस पे बात कर रहे हो, बार्क, जीएसआई, जो भी है, उनमें इंटर्नशिप मैटर नहीं करती है. बट यस, पीएचडी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर करता है कि आपने पहले ऐसा कुछ काम किया है रिलेटेड. सो दे विल सी योर प्रोफाइल. और जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रायोरिटी दे देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ है. तो लेकिन जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं पे भी ये एलिजिबिलिटी नहीं है, और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं इसके बेसिस पे. लाइक ड्यूरिंग एमएससी जो आपने किया है दैट इज सफिशिएंट. Yeah. Like internships is not the like main criteria. For यस, getting a बट job. इफ यू हैव अ चांस और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. बट इट इज देन अगेन इट विल कम टू योर टाइम मैनेजमेंट. लाइक यू आर एडिंग वन मोर थिंग. सो that's up to you that what you want from your life actually. So then the things become clear. If you have time and you are clear that you are a research person, or you want to make your career in that line, तो obviously आपको पहले से वो चीजें सोच लेनी चाहिए. Okay. And in this COVID time also, it has become very difficult to grab any internship. या ड्यूरिंग कोविड तो सब कुछ ही ऑनलाइन है. बट स्टिल एग्जाम तो होगा, ऐसा नहीं है. मे बी इट कैन बी डिलेड ड्यू टू द प्रॉब्लम. बट यस, same time the competition is also like increasing, because now if the exam delayed for 1 year, then academic is not delayed na, that your juniors will also compete with you, your senior will also always compete with you. So that thing is also adding. So we just continue our preparation, and that is sufficient. Like if we have a clear mindset that now we actually want to do this thing, so that is a kind of you can take this is a motivation that when I will get the chance, I will break it or something like that. Yes. Okay. So why didn't you opt for PhD? Like what motivates you towards the job sector? Actually, that question I also think, and कई बार मैं मुझे लगता है कि इस चीज़ को कैसे सोचना चाहिए. बट मैंने पीएचडी पर्टिकुलरली इसलिए नहीं लिया बिकॉज आई एम अ वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ पर्सन. और PhD, as you all know, that it is a 5 to 7 year process in India if you want to do, and for abroad also it will take 3 to 4 years. And during that time you need to be very dedicated, and you are completely giving your time to one thing. And in between, if you want to change your mind, that if you are not feeling right, and you want to change something, so it is very hard, it is very difficult to change in between. So इसलिए मैंने PhD ज्वाइन नहीं किया था. मेन पर्पज यही था बिकॉज इट्स अ वेरी काइंड ऑफ, मेरे लिए ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की चीज थी, जो मुझे लगा कि, एंड ऑल्सो आफ्टर PhD what will you do? I mean, you search for a job. So I think ये भी एक फैक्टर था. बट या PhD persons I really respect because they have the kind of enthusiasm and dedication that they are putting their precious, I will say precious time. So we cannot say that they are doing for job or something like that. They have a passion. So आपका ये MSc से ही क्लियर था या फिर MSc के बाद ऐसे ही रैंडम डिसीजन हो गया कि ऐसे जॉब की तरफ ही जाना है, PhD की तरफ नहीं जाना? नहीं, ड्यूरिंग MSc ही मेरा क्लियर था कि आई एम नॉट मेड फॉर PhD. एंड इसीलिए जो भी हम लोग
हम लोग जैसे ग्रुप में रहते थे तो सबका ही ये क्लियर था, इसीलिए वो शायद ग्रुप इसी वजह से बना भी था, क्योंकि वी हैव अ सेम माइंडसेट. So yeah, during MSc it is clear that I will not do the PhD. So, Pankaj, as there is very less opportunities in the chemistry field, so have you ever thought of switching the field? Actually, guys, you don't ask this question because you are the person which are on best place. I think in India you are in best institute, and all know that vacancies are less, recruitment is less from like past 3 4 years now. It is due to COVID also, and due to our economy, I will say. But uh, number of vacancies can be less, but you guys are the best. So if you are sound like that vacancies are less and what will we do and all that, then what you can expect from a student from central university or some kind of universities and colleges. So I think you just fight for, if there is a one seat, then you should fight for that also. So yes, competition is there, but I can surely say that it can take time, like 1 or 2 years. This phase is very difficult. We just start thinking that I'm not doing well or something, we are judging ourselves, but that's not the criteria. After 1 or 2 year, you can also see that all the batchmates and you also, that you get settled in a very good place as compared to other students. So yes, that phase is difficult, but yeah, you that will teach you a lot. So like आपके माइंड में कोई बैकअप ऑप्शन भी था? बैकअप ऐसा था कि गेट हमने दिया था, और जीएसआई में ड्यू टू सम रीजन आई वाज अनेबल टू फिल द फॉर्म, बट वो मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए. बट एज सच बैकअप एज ए कुछ नहीं था, लेकिन यही चीजें थी जो मुझे करनी थी आफ्टर एमएससी. These are the targets which I want to achieve. Okay. And yes, no, there is no backup, because as you said, there are very less number of lines in which we can go. So these are the things. तो जनरली बार्क एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है, और क्या आपने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी मतलब बार्क के लिए? Actually, BARC is a institute which its its selection criteria is very different from other institutes. Like as you can see that it is also uh, taking from gate score and also conduct separate written examination. So it gives a fair chance to those students which are unable to perform good in gate, so they can also perform in written test. And after written, that is the only the eligibility criteria. The marks will not be added into merit list. You got a call letter for interview, and your selection is only based on the interview and your performance in interview. And after interview, whether you are selected or not, but you cannot say that I am unable to give my 100%, because the atmosphere of interview is like that they will open your brain and just see that what the actual person you are. You cannot hide anything from them, because that's why the interview timing is also like 1 hour and 30 minutes. Even my interview is like 1 hour and 47 minutes. So during that interview, they will like see the things like how actually your understanding is, and about the concepts. So if they are not running for the quantity, that how much you know, they are not running for it. They already give you 4 or 5 topics of your wish, and in on those topics they only ask in of your choice topics. So they are not like, they cannot ask random questions and all the things. They will create question from your answer and just try
to see that how much you can analyze the problem. If there is any problem, then how will you tackle, how fundamentally you approach the problem. So that is the criteria. So that's the best thing about BRC. Okay. And So, the question you asked that I how I prepare. So like as you can see that the all the examination of 2021 are delayed due to the COVID. And so usually the BRC examination is in like April, May, like that. But on 2021, it was extended to September. And उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि कॉलेज खत्म हो गया था एंड आई गोट अ सफिशिएंट टाइम. बट बीआरसी के लिए पर्टिकुलरली मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने पढ़ाई की थी. एंड मैंने पहले रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझा कि व्हाट दे वांट. एंड आफ्टर रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए एज यू नो, क्योंकि आपको पता होता है कि वो लोग 5 टॉपिक आपसे पूछने वाले हैं, तो यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. सो उसके लिए मैंने 3 महीने प्रिपेयर किया था और ट्राई किया था कि लाइक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें, बिकॉज दे एक्चुअली दे आर देयर डिमांड और दे जस्ट वांट टू सी दैट. सो यस, 3 months for me that was sufficient, and for anyone 3 months are more than sufficient. okay. सो आपका बार्क में अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है, और इज देयर एनी ट्रेनिंग पीरियड और देयर इज अ डायरेक्ट ज्वाइनिंग? बार्क में अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, एक्साइटिंग है. डेली वी आर गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू एप्लीकेशन of chemistry, and I will not say only chemistry, but physics, mathematics, or design, you can say. So all the things you got to learn. और आफ्टर इंटरव्यू जब आपका रिक्रूटमेंट होता है तो देयर इज अ पीरियड ऑफ 1 year जिसमें आपको ट्रेनिंग करनी होती है. दैट इज कॉल्ड एज OCES, ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स. तो वो 1 साल का होता है, बट ड्यू टू कोविड नाउ इट इज ऑफ 10 months. एंड इसी कोर्स में वो आप लोगों को ट्रेन करते हैं. और आपने अगर देखा हो तो लाइक फिजिक्स इज अ एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर. सो यहाँ पे you will no longer be a chemist only, but you have to work like a scientist, like in all the disciplines. You need to get the knowledge and apply it in the practical aspects. So काफी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में. एंड वही लाइक एग्जामिनेशंस एवरी मंडे वी हैव एग्जाम, एंड there are vivas, practicals, and this is like a they are just putting everything in your mind, and at the same time you also need to perform. So काफी exciting रहता है. Okay, like this is the new thing I got to know. Like exams भी देने पड़ते हैं अभी भी. मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहते हैं. सैटरडे संडे छुट्टी रहता है. लाइक आप लोगों को लगेगा कि 2 दिन का वीकेंड है, बट एट द सेम टाइम दे आर प्लेइंग लाइक मंडे यू हैव एग्जाम, सो यू कैन नॉट वेरी वेल एंजॉय योर वीकेंड. नाउ इट्स अप टू योर मैनेजमेंट. एग्जामिनेशंस इज आल्सो यू नीड टू परफॉर्म गुड. और साथ के साथ एक लर्निंग का भी होता है कि आपको एडिशनली भी एफर्ट्स पुट करने होते हैं, बिकॉज अगर आपको कोई डिजाइन पढ़ा रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू आर अ पर्सन फ्रॉम द केमिस्ट्री, देन हाउ विल यू कोप अप. तो वो चीजें थोड़ा थोड़ा आपको आपका एक्सप्लोर करना रहता है फील्ड को. फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर. यू नीड टू स्टडी अ फिजिक्स. इवन every part of science you need to enjoy. Yeah. So you will get a real thrill that what is the training of a scientist. You can मतलब feel the thrill. So like आप enjoy कर रहे हो अपने whole process को. Yes.
या हेक्टिक होता है, आई एम नॉट सेइंग कि इजी है, बट यस काफी काफी सारी चीजें नई होती हैं ना। जब एमएससी में हम जाते हैं तो ज्यादा चीजें नई नहीं होती हैं। अगर अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो यस दे आर आल्सो एडिंग थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन पार्ट, और आई मीन टू से द रिसर्च ओरिएंटेड चीजें भी वो लोग डालते हैं। बट वो वहाँ पे हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना होता है, कंप्यूटेशन नहीं पढ़ना होता है। बट आफ्टर सेलेक्टेड इन बीआरसी, आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा फील्ड नहीं है और मुझे ये नहीं पढ़ना है। आपको अपडेट रखना होता है। यही ये भी एक डिफरेंट चीज़ है बीआरसी की, जो अलग इंस्टीट्यूट से इसको थोड़ा अलग करता है, क्योंकि कई जगह पे रूटीन जॉब है। लाइक आपको मॉर्निंग टू इवनिंग जाना है और रूटीन वर्क करना है, जो कि पिछले काफी सालों से चलता आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अ, आपको जितना भी टाइम हो गया है जॉब करते हुए, लाइक आपको 20 ईयर्स हो गया है जॉब करते हुए, बट स्टिल यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि मुझे कुछ एड ऑन करना है खुद के प्रोफाइल में, कुछ नई चीजें सीखनी है। सो ये यहाँ पे हमेशा रहता है, बिकॉज एयर द प्रमोशंस आर टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा उतना आपको प्रमोट किया जाएगा। आपको आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, पीएचडी आप कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। सो हेयर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ जॉब। अगर आप पढ़ रहे हैं तो nobody will disturb you like what are you doing, it is a part of your job. Like if you are reading a book, then it is a part of your job. So that is a unique thing, that nobody will disturb you or say you that you are in a like office and why are you reading a book. You can read any science book. और वो पार्ट है कि आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है अपने आप को एक तरीके से नॉलेज गेन करने के लिए। और उसको मतलब ऐसा है कि इट इज नॉट अ लेबोरेटरी रिसर्च। आपने कुछ नया आइडिया है आपके पास, आपने उसको कुछ लैब स्केल पे किया, तो वो वहीं तक आप उसको नहीं रख सकते हो। आपको देन यू हैव टू मेक अ टेक्नोलॉजी, लाइक आपको वो सर्विस ऑफ द नेशन में लेके आना है। लाइक हाउ डू यू बिकम अ थिंग लाइक मोर फिजिबल, और इन इन पॉइंट ऑफ व्यू द इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। सो ये सब चीजें आपको रिलेट करनी होती हैं, और तभी आपको पता चलता है कि जो ट्रेनिंग आपकी हुई थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि अनवांटेड चीजें आपके आपके साथ करवाई जा रही हैं, तो वो काफी यूजफुल रहती हैं। तो यस। Okay. So the next question, what we want to ask you is, can you please tell our viewers what other opportunities one can have after clearing GATE and NET exam? Teaching jobs का हमें पता होता है, और PSUs भी पता होता है, कुछ 2-4 ही PSUs पता होते हैं सबको। तो उनके अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? अगर इन चीजों को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दें, तो R&D is one thing, a production unit, you can say the PSU, or like other thing, academic is the third thing. तो R&D में 1 यूनिट की आप डायरेक्ट PhD कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि आप पर्टिकुलरली PhD नहीं कर रहे हैं, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बार्क है, DRDO है, और लाइक मेन तो ये 2 ही बोल सकते हैं। अदर इंस्टीट्यूट आपने जैसे ज्वाइन कर रखा है, CSIR है, सो उसके अंडर में आप रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सपोजर होता है कि आप PhD कर सकते हैं। दे विल लाइक प्रमोट यू फॉर द PhD। एंड सेकेंड, अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, प्रोडक्शन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ द रूटीन जॉब। लाइक देर इज नो प्रेशर दैट यू शुड डू समथिंग न्यू और समथिंग इनोवेटिव, यू जस्ट मैनेज द रूटीन थिंग्स। सो इसमें लाइक PSUs हैं, जैसे ONGC है, IUCL में भी केमिस्ट का होता है, एंड BRC, like after completion of the training,
you got two opportunities from DAE. That is, BRC comes under the Department of Atomic Energy of Government of India. So after completion of BRC training, you get two opportunities. Whether you would like to proceed your career in research and development (R&D), or you can join the PSUs like NPCIL. You can join. Now there is one more PSU is going to commission in DAE, that is Bhavini. So they will also give you the choice. वहाँ पे भी वो भी PSU में भी आप काम कर सकते हैं एंड R&D में भी काम कर सकते हैं. That depends upon your interest. Oil and gases की जो PSUs हैं, like every industry you want a chemist. I can say that definitely they need a chemist. If industry you have to run, you need a chemist. And this DST, there is a Department of Science and Technology. They are also recruiting, but their recruitment is not very frequent. After 3-4, maybe they can take longer time. DRDO के through उनका recruitment होता है. So that is also a routine job. And I will say these are the main national kind of institutes. Other you can say the pharma industries. You can go if you are interested in pharmaceuticals. And academic is a very a big portion जहाँ पे students जाते हैं, like whether you are going in a coaching institute or in a college after qualifying the NET examination, or any other central or state colleges or universities. I mean, you can pursue your career in academic also in teaching line. And अगर आप higher studies के लिए जाते हैं like PhD and postdoc, after that you can join the higher institute, premium institutes of India, like IITs, NITs, IISER, all the things you can join. So I think these are the main core streams, I will say. But you know, being a dynamic person, you can search out of the box. Like you can go for the civil services, you can go for the other state civil services, or maybe like weather broadcasting, or that depends upon your interest. Like you can change at any time. There's no restriction. So, and from IIT Delhi you get enough confidence and skills that at any time you can change your mind, and you have that confidence and skills also, because क्योंकि इसी ड्यूरेशन में आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि that at any point you are more than eligible or a normal person, that you can pursue any career, and definitely you will do the best in किसी भी department में, organization में आप जा रहे हैं, and you will get the designation, because where you are from, that also matters sometimes. So yeah, you can pursue in any stream. You can pursue in core or non-core. That depends upon the interest. Okay. Like a handful of Okay. options होते हैं हमारे पास. Yes, of course. But इस time में हमें वो दिखते नहीं है, because we are running for only 2-3 options. Yes, yes. हमें लगता है कि इनमें नहीं हो रहा है, तो we have nothing. But ऐसा नहीं है. जब हम अपने स्केल को बड़ा करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो there are lot of options. और ऐसा नहीं होता है कि हर कोई एक ही फील्ड में अच्छा करता है. Maybe there are many people which are not doing good in one particular field, but they are doing best in other field. So maybe that depends upon the particular person कि वो उसका interest क्या है. Yeah, we have to explore things. Yes, in entire life, I will say, not that enthusiasm doesn't diminish after getting a job. Should explore. Okay. Okay. So Pankaj, are you satisfied with your job, or are you looking for something else? Actually, satisfaction is something different for me. Like as I told that I believe in being a dynamic person, or I always look for bigger opportunities. It doesn't mean that the opportunities belong to other department. That can be here also. But yeah, I have a kind of
not a narrow kind of thing that I have to work only here or there. But yeah, uh, once you feel that you need to change something in your life, or you can do better in some other fields, and you have a confidence that will come from inside. Like nobody will teach you, and nobody can teach you this thing. So अगर आपको अंदर से लग रहा है कि you need you need to change something, then of course just go for it. And I will also believe that at some time if I feel, then I will also do the same. Okay. So, tell us about some values from IT which helped you in getting the job and becoming successful in your life. Yes, of course, because IIT has a lot of value and a vision, I can say. Actually, sometimes we feel when our professor said that you don't know anything, you just write the paper of jam and come here. It happens many times because actual reason behind that statement is they want to change our perspective, or they want to change our uh, approach toward the subject. I mean, the subject is not like read something and do 10 questions of net previous year and 20 questions of get previous year. That is not the subject actually. So we just have to uh, broad this scale and look for the applications of the subject, and they what this is the thing they actually want. So इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोफेसर्स काफी रूडली ये चीजें बोल देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है या तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो. So they actually want to change our approach toward the problem. और ये सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे because that institute is best because it have a best faculty or infrastructure, I can say. So they actually want that in 2 years, if they are able to change the way we are thinking and our approach, then they are like they are feeling good that they have changed the students thought process, or how they will approach toward the problem. So that thing is one thing that I got from IIT Delhi, that before coming and in these 2 years, I changed a lot in in the reading, in the learning, and I can say the how to make a thing broad, not stick to few applications. So that is the one thing. Second is I can say the management and the friends, like teamwork. You can say that if you don't know something, then being a student every time, like हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमारा जूनियर है या हमारा फ्रेंड है या बहुत छोटा सा डाउट है क्या पूछेंगे. सो ऑलवेज लाइक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए हमें, और डिस्कस करने से काफी सारी चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं. लाइक हमें किसी चीज का आंसर पता है, बट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट कि कहीं ये गलत तो नहीं है. सो एक बार डिस्क्लोज करेंगे, देन वी विल हैव अ चांस टू करेक्ट इट. So that is the second thing. Management is the second thing, and also the pressure that a lot of things you need to manage: the competition, the course, the exams here, and all the things you need to manage. So management skill is the best thing you can get from IITs, because they are putting the pressure like uh, they don't think that you are some student of 20-21 age. Their expectations are very high, so that will definitely help you. These are the three things I can say that I have learned from here, and they will be like uh, they will be with me forever because they are the permanent things. So, Pankaj, any message you want to share with our viewers? Yes, of course. It's a very good platform, and I want to say that don't be bound yourself to one thing if you are unable to do good. And if you are unable to do good is a different thing. Do you want to
do something, or you are just doing because your colleagues, your friends are doing the same thing. That is a particular thing you need to uh, make a difference here. At आपको क्या particularly वो process में enjoy आप कर पा रहे हैं, या फिर आप just you are a part of the rat race. एंड अगर ऐसा है कि आप पर्टिकुलरली उस चीज से बिलोंग नहीं करते हैं, देन you need to actually switch. आई विल से दैट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स, क्योंकि इजी नहीं होता है इस स्टेज पे। लोगों को हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, रादर आवर फैमिली फ्रेंड्स, एंड हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनको होती हैं, हमारे टीचर्स को या वेल विशर्स आई विल से। सो बट यू नीड टू टेक अ डिसीजन। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, देन इट्स योर लाइफ, डू इट, थिंक प्रॉपरली, टेक एडवाइस, and once you decide, then don't regret that what you did. Just follow your passion. And कई बार चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, like I have prepared very well for the like gate examination. My preparation was like that. My expectation that I will be in at least in top 20. I will grade, but that one day can be like opposite to what you want. So but that hard work which you have put it, that never diminish actually. At some time that will give you so much of the things that you have never like think that can be. So ऐसा नहीं है कि सब कुछ planned होता है लाइफ में। कुछ uncertain, like being a chemistry student, always believe in Heisenberg uncertainty principle, that you cannot be certain about the things. There will be uncertainty. So, but you should have a confidence that I will do it. I am doing very well. I am putting my 100%. And once you have these feelings, then result doesn't matter a lot. Like you can make yourself satisfied that okay, maybe that day was not for me, but yeah, that will pay you once a time. That will pay you definitely. Just follow your passion, do your best, and do your best in the thing which you actually want. Don't be a part of rat race. There are lot of n number of opportunities. uh, on another side, we are saying our economy is very low with the COVID pandemic, less recruitment, everything is there. That fact, that is a fact. But still, there are very opportunities, lot of opportunities, and we just run for our passion. Okay. So let's wrap up with this session with an interesting question. So यदि आप कोई chemistry apparatus होते, then what you want to become and why? Chemistry apparatus. Actually, if you have a opportunity to become something, and if you really have a power that you can be, so being a most important person, I will prefer. And in chemistry lab, I will prefer to have a weighing machine, because you cannot do anything without a weighing machine. You cannot run your lab. Even though if we switched off all the weighing machines of IIT Delhi, then people will come out and say that what we will do. We cannot do any experiment, anything, because that's the thing where you should start your experiment or anything. You just need it. So I think that I will be if I have a chance. Okay. That's interesting. Yes, very interesting. So thank you so much, Pankaj. It has truly been amazing talking with you. It's been an insightful discussion. Our viewers will learn so much after watching this. आपका Chemocronies के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you, Thank you, same everyone. here. I am also feeling very good that you guys are doing absolutely great job for the viewers, and thank you very much. Have a good day. Okay. Okay.
Thank you so much. And thank you everyone for watching this episode. We will bring much more episodes soon. So stay tuned with us.